बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students or Aziz Talaba wa Talibat, Assalamu alaikum. Today we are going to study another concept that is known as types of relationship and degree of relationship. So let's start. So first of all, we can see that in order to describe types of a relationship, we are studying types of relationship. So in order to describe types of a relationship, we consider only maximum cardinalities of a relationship. As we know that every relationship has maximum cardinality and the minimum. So in order to describe the type of relationship, whether it is one-to-one, one-to-many or many-to-many, we only consider the maximum cardinalities of both sides. So again we study it. In order to describe types of a relationship, we consider only maximum cardinalities of a relationship. So उर्दू में इसको समझ लेते हैं कि जब भी कभी हमने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करने होंगे तो हम हमेशा मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटीज़ एक रिलेशनशिप की देखेंगे दोनों साइड्स पर. तो लिहाजा ये देखिए, स्टूडेंट की साइड पर जो मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी है वो मैनी है और फिर कोर्स की साइड में मैनी है, तो हम इनको कंसिडर करेंगे और हम मिनिमम को कंसिडर नहीं करेंगे. सो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के टाइप्स बनते हैं: वन टू वन रिलेशनशिप, one to many relationship and many to many relationship. So when we talk about different types of relationship, we have one to one relationship and one to many relationship and many to many relationship. So now we start with the first one, that is one to one relationship. If for a single instance of an entity class A, so we can see that we have an entity class A. If I consider it's only one record, single record, and we find maximum one instance of an entity class B, we find maximum one record of B, and vice versa. That means for one record of A, we get maximum one record of B, and for one record of B, we get maximum one record of A. Then it is known as one-to-one relationship, right? So we can take another example of this one. Say we have student entity class and project entity class, and these both entity classes are related with registers relationship. So student, registers, project. If I consider only maximum cardinalities, not the minimum, then I will say that one student registers maximum one project, while on a project there can be only one student at the most. So this is one to one relationship. इसी को उर्दू में देख लेते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या है. अगर हमारे पास एक एंटिटी क्लास ए है और मैं इसके एक इंस्टेंस या एक रिकॉर्ड को देखता हूँ और मैं उसके लिए बी के मैक्सिमम रिकॉर्ड्स देखता हूँ कि एक ए के लिए मैक्सिमम कितने बी के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, और मुझे मैक्सिमम एक रिकॉर्ड मिलता है, और दोबारा फिर जब मैं बी के एक रिकॉर्ड को देखता हूँ और मुझे उसके लिए ए का एक ही मैक्सिमम रिकॉर्ड मिलता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम वन टू वन या वन कॉलन वन से लिखते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं. इसकी मिसाल देख लीजिए कि एक स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है. तो मैं अगर ये कहूँ कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकेगा और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट रजिस्टर होगा, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. सो ये हमारे पास पहली टाइप है वन टू वन रिलेशनशिप, और इसमें हमें दोनों साइड पे मैक्सिमम वन मिलता है. अब देखिए one to many relationship. This is the second type of relationship, one to many. If for a single instance of an entity class A, I will consider only one record of A, and I get maximum many instances of B or many records of B, and when I take one record of B, then I get only one record of A. This is known as one to many relationship. We can read it out. If for a single instance of entity class A, for one record of A, we find maximum many instances of entity class B, we find many. Check, right? But for a single instance of entity class B, if I take one record of B and I find only one maximum record of A, then in that case it is known as one to many. So this is another kind or second type of relationship, one to many relationship. Remember, sometimes you people call it like many to one. There is nothing like many to one.
because this symbol, either this one can be here or this many can be here, or this one can be here and many can come over here. So in this type, in any one direction we get one as maximum, and at the other end we get the many at the maximum. So if many comes over here and one goes over there, then in that case it never makes it many to one, because it is the same type. So this says one to many. अब इसको उर्दू में देख लीजिए. वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक रिकॉर्ड लें एंटिटी क्लास ए का और यहाँ पर हाथ रखें और मैं कहूँ एक ए के लिए मुझे मैक्सिमम बी के कई रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, बी के मैक्सिमम कई रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं बी का एक रिकॉर्ड पर हाथ रखता हूँ तो मुझे ए का मैक्सिमम एक ही रिकॉर्ड मिलता है, तो इसको हम कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक टीचर कई प्रोजेक्ट सुपरवाइज करवा सकता है. सो एक टीचर मैक्सिमम कई प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन अगर हम एक प्रोजेक्ट पे हाथ रखें, एक प्रोजेक्ट को सोचें, तो हमें उसके लिए हमेशा मैक्सिमम एक ही टीचर नजर आएगा. तो ये एग्जांपल है वन टू मैनी की. लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी. इफ आई कंसिडर वन टीचर or one record of teacher entity class, I get many records of project, many projects for one teacher. One teacher can supervise many projects. But if I say that if I consider one project, then for that particular project I get maximum only one teacher. So this is one to many. But remember, this one to many symbol tells us that it is one to many relationship. Sometimes students call it many to one if many is here and one is here. No, it will not change the type of the relationship. The type of the relationship will remain the same. In any direction we can get maximum one, and in the other direction many, right? Or maybe we get one over here and many over here. In both cases it would be one to many. So this is the second type of relationship, that is one to many relationship. Now let's see many to many relationship. If for a single instance of an entity class A, check if I consider one record of A or single instance of A, I get maximum many records or many instances of B, and vice versa. That means if I consider also one B, only one B, and I also again get many A's, many records of A's, in that case it is many to many relationship, right? So let's take an example. One student can register maximum many courses, and one course can be registered by maximum many students, though this is the example of many to many. इसको उर्दू में देख लेते हैं कि अगर मैं ए एंटिटी क्लास के एक रिकॉर्ड को कंसिडर करूं और उस एक रिकॉर्ड के लिए मुझे बी के कई रिकॉर्ड्स मिले, और जब मैं बी के किसी एक रिकॉर्ड को कंसिडर करूं और मुझे ए के कई मैक्सिमम रिकॉर्ड्स मिले, तो इस सूरत में इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं. मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है मैक्सिमम 6 कोर्सेज या ज़्यादा कोर्सेज, यानी मैनी कोर्सेज, और एक कोर्स जो है उसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं कई स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कई स्टूडेंट्स. सो ये एक मिसाल बनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की. सो दिस इज़ द थर्ड टाइप, दैट इज़ मैनी टू मैनी. सो वी हैव सीन one-to-one relationship, one-to-many relationship, and many-to-many relationship. So here is another example with all types of relationship. I have put these red symbols as the minimum cardinality, so do not look at these or consider them right now. Otherwise, every ERD has the maximum and the minimum cardinalities to describe the relationship to the designers, right? So now here we will not consider these 1 or 0 because these are red and these are minimum. So we will say that for one student many courses, for one course many students. So this is many to many relationship. One course can be taught by many teachers, and one teacher can teach many courses, again both sides many, so many to many relationship. Now check, one student can work or can register maximum one project, and on a project there can be only one student who is working, so one to one relationship. Here one teacher can supervise many projects while one project can be supervised by only one teacher,
So this is one-to-many relationship. Again, one teacher has maximum one field, and for a field we can have many teachers. So this is one-to-many relationship. So these are the types of relationship. We can explain it in Urdu. So now अब देखिए कि अगर मैं कहूँ ये पूरी डायग्राम है और एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम इन रेड वाले सिंबल्स को, सुर्ख सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे या उनको कंसिडर नहीं करेंगे, बनाए ज़रूर चाहते हैं, ये काम आते हैं डिज़ाइनर्स के लिए इम्प्लीमेंट करते वक्त और इम्प्लीमेंट जो कोडर्स हैं, लेकिन इस वक्त अभी हम कंसिडर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, तो हम इन सुर्ख वालों को कंसिडर नहीं करेंगे, 1 या 0 को। तो हम कहेंगे एक स्टूडेंट मैक्सिमम कई कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक कोर्स कई टीचर्स पढ़ा सकते हैं, एक टीचर कई कोर्सेज पढ़ा सकता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा और एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट होगा, 1-to-1 रिलेशनशिप। एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम एक टीचर उसको सुपरवाइज कर रहा होगा, किसी भी एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम एक टीचर सुपरवाइज करेगा, और एक टीचर के पास कई प्रोजेक्ट्स होंगे, वो कई प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा होगा, तो 1-to-many रिलेशनशिप। एक टीचर मैक्सिमम एक ही फील्ड का होगा और एक फील्ड के हमारे पास कई टीचर्स हो सकते हैं, तो 1-to-many रिलेशनशिप। So these are the 3 types of relationship that we have studied. So now let's start with another concept, that is degree of relationship. So how can we define this concept of degree of relationship? Degree of a relationship is the number of entity classes that participate in that relationship. There is the number of entity classes or rectangles associated with one relationship or one line or diamond, right? So that means in case if with a diamond we have only 2 entity classes associated, then we will call it binary relationship. So you would have seen so many binary relationships. Even in the last diagram, all these are one line, 2 rectangles. So these are the binary relationships. So we have different type: unary relationship, degree 1; binary relationship, degree 2; ternary relationship, degree 3; n-ary relationship, that is known as higher degree, that is 4 or above. So now let's explain it in Urdu. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये है कि एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटी क्लासेस हिस्सा ले रही होती हैं उनको हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। यानी अगर मैं इस मिसाल को लूँ तो यहाँ पर आप देखिए हर ये लाइन जो है रिलेशनशिप है और हर लाइन के साथ हमें 2 एंटिटी क्लासेस नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको भी बाइनरी बोलूँगा यानी डिग्री 2। इस वाली लाइन या रिलेशनशिप को भी मैं बाइनरी बोलूँगा, डिग्री 2। सो इधर देखिए अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कई टाइप्स हैं: unary relationship, binary relationship, ternary relationship, and n-ary relationship. So degree of a relationship is the number of entity classes that participate in that relationship. या अगर हम सादे लफ्ज़ों में बात करें तो number of entity classes associated with one relationship. Rectangles एक लाइन्स के साथ जितनी भी जुड़ी हैं, 2 जुड़ी हैं तो बाइनरी, 1 जुड़ी है तो यूनरी, 3 जुड़ी हैं तो टर्नरी, इन सब को हम तफसील से देखते हैं। So let's start with the first type of degree of relationship. So that is unary or degree 1 or the recursive relationship. This is a little bit different for the new students who have only seen the binary or degree 2 relationships. It will be different for them, but it is very easy. So let's start. If only one entity class or an entity class participates in a relationship, then it is known as unary relationship. So check here, we have an entity class employee that is making relationship with itself. That is, employee manages employee. So this is known as degree 1 because in a relationship, in one line or one diamond, we have linked only one entity class. One rectangle is linked with one diamond. Similarly, check, subject is prerequisite of another subject. So again, subject is making relationship with itself, so it would be the unary relationship. A person is married to a person, so again it is making the relationship, the person class is making a relationship with itself, so it is known as degree 1 unary. And also we call these relationship as recursive. How? Look, recursion means
that it is making relationship with itself, it is making that association with itself. So it is also written in so many books that recursive relationship. So now let's see this one, the same topic in Urdu, यूनरी और डिग्री वन और रिकर्सिव रिलेशनशिप. अगर हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप हो और उसमें सिर्फ एक एंटिटी क्लास हिस्सा ले तो हम उसको यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय की एंटिटी क्लास अपने ही साथ ताल्लुक बना रही है तो उसको हम यहाँ पर यूनरी डिग्री वन या रिकर्सिव रिलेशनशिप कहेंगे. इसी तरह देखिए, सब्जेक्ट इज प्री रिक्विजिट ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स है या प्रोग्रामिंग वन कोई कोर्स है और ये प्री रिक्विजिट है एक और कोर्स का जो कि प्रोग्रामिंग टू है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग है, तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर ही होगा जिसको कि अभी हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कह रहे हैं या प्रोग्रामिंग वन कह रहे हैं, और प्रोग्रामिंग टू या ऊप भी इसी के अंदर होगा. तो लिहाजा इट इज़ मेकिंग रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, अपने आप से ताल्लुक बना रहा है. और यहाँ पर देखिए पर्सन की क्लास है, इसमें तमाम मर्द औरत हैं और हम यहाँ से कहते हैं अ पर्सन इज़ मैरिड टू अनदर पर्सन. सो अगेन इट इज़ मेक, तो दोबारा ये अपने आप के साथ ताल्लुक बना रहा है. तो इसको हम कहेंगे इन तमाम को यूनरी, डिग्री वन और रिकर्सिव. रिकर्जन आप जानते हैं कि जब भी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक एंटिटी क्लास अपनी ही क्लास के साथ ताल्लुक बना रही है, तो इसको हम हमेशा रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं. सो दिस वन वाज द फर्स्ट, दैट इज द यूनरी रिलेशनशिप. नाउ लेट्स सी व्हाई वी नीड द यूनरी रिलेशनशिप. चेक. If an entity class employee is making relationship with itself and we make two entity classes, we represent it with two entity classes, then it will be a mistake because we are going to have two tables. So we do not show it like this, that employee manages employee. Rather, we make that relationship with itself, that is employee manages employee. So this is the way how we represent the unary relationship. उर्दू में बात कर लेते हैं कि यूनरी रिलेशनशिप क्यों होता है. देखिए, अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है और वो अपने आप के साथ ताल्लुक बना रही है कि एम्प्लॉय मैनेज करता है किसी और एम्प्लॉय को, तो अगर हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करेंगे तो बाद में हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशंस बन जाएंगे और ये मिस्टेक है, गलती है. तो लिहाजा हम क्या करते हैं, अगर वो अपने आप से ताल्लुक बनाए तो उसको अपने आप से ही जोड़ देते हैं और उसको यूनरी या रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं. अब हम दूसरे टाइप देखते हैं, बल्कि इसकी एक मिसाल देख लीजिए जो आपके पास आपकी बुक में दी हुई है. पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, टीम स्टैंड्स आफ्टर टीम. सो यू कैन सी दिस इज फ्रॉम योर बुक, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द बुक एंड दिस इज द सेम relationship if you put a diamond over here, or even if you do not put the diamond and you relate it with the line, so it is unary. Now the second one, that is binary or degree 2 relationship. If two entity classes participate in a relationship or in one relationship, then it is known as binary relationship. To check, student registers course, these are two different entity classes and there is a relationship between them. So as two rectangles are related or associated with a single diamond or a single line, so this is known as binary relationship. Then similarly, customers buys product. So again, customer is one entity class, product is another entity class, and these are associated with the relationship. So this relationship, this particular relationship is known as binary relationship. Now check, employee works on the project. So here these are two different entity classes and these two are associated with one relationship. So again, these are the binary relationship. Let's discuss it in Urdu. So अगर हमारे पास किसी भी एक रिलेशनशिप में दो मुख्तलिफ एंटिटी क्लासेस हिस्सा लेना शुरू कर दें, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप. बाय मीन दो. तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है. स्टूडेंट और कोर्स दो अलग एंटिटी क्लासेस हैं और इनके बीच में एक ताल्लुक है. लिहाजा ये जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की डिग्री 2 हो जाएगी. यानी स्टूडेंट और कोर्स दो एंटिटी क्लासेस हैं, तो हम इसको डिग्री 2 रिलेशनशिप भी कहेंगे और बाइनरी रिलेशनशिप भी कहेंगे. इसी तरह
अगर हमारे पास एक ताल्लुक हो कि कस्टमर बाइस प्रोडक्ट, सो बाइस का जो रिलेशनशिप है इसके साथ दो एंटिटी क्लासेस एसोसिएट हो गई हैं, तो नाउ इट तो अब ये डिग्री 2 या बाइनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। इसी तरह एम्प्लॉई वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट, सो अब ये जो रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन का, इसमें दो डिफरेंट एंटिटी क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, वन इज द एम्प्लॉई एंड और अदर जो दूसरी जो है वो है प्रोजेक्ट। सो लिहाजा ये भी बाइनरी, बाई मीन दो, तो बाइनरी या डिग्री 2 रिलेशनशिप कहलाएंगे। तो ये तीनों आपके पास डिग्री 2 रिलेशनशिप की मिसाल है। सो दिस इज़ द, ये आपके पास एक तस्वीर है आपके बुक की, आप ये वहाँ से देख भी सकते हैं। एम्प्लॉय इज असाइन पार्किंग स्पेस, product line contains product, student registers course. So this is from the book and you can read it. These are the simple similar examples, right? So ये आपकी किताब में से आपने इसको पढ़ना है। Now check the third type, that is the degree 3 or the ternary or degree 3 relationship. If three entity classes participate in a relationship or in one relationship simultaneously, then it is known as ternary relationship. Now check, this single diamond or this single line is connected with three entity classes simultaneously. It is giving me the data about or information about which student is taking which course and he is studying in which program or taking that course in which program. So now you may check here, instead of having two, we have three entity classes that are linked with one relationship. So this kind of relationship is known as ternary or degree 3 relationship. But check, there is one misconception you people always do. There is, if I show you this diagram, student registers course, student registers for some program, and course is registered in some program, so you call it a ternary. No, it is not a ternary, because here we do not have a single diamond or a single line connected to these three. Rather, we have one line for two, that is student registers course. This is one relationship and this is one binary. When I look at the student and the program and registers, again it is another relationship and it is between student and program, another binary. And if I consider course and program, it is another relationship between two entity classes. So in fact this diagram is not a ternary, but these are the three binary relationships. One is here, another one is here, and another one is here. So let's explain it in Urdu. Ternary, अगर हमारे पास तीन एंटिटी क्लासेस हिस्सा लें एक रिलेशनशिप में, तो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक ही रिलेशनशिप है, एक ही डायमंड है, या एक ही लाइन, अगर हम डायमंड ना भी बनाए, एक ही लाइन है जो तीन को जोड़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप या डिग्री 3 रिलेशनशिप। ये हमें ऐसे मालूमात दे रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स किस प्रोग्राम में पढ़ रहा है। तो लिहाजा ये एक ही वक्त में तीन तरह की मालूमात दे रहा है, ये एक रिलेशनशिप है। जो हम गलती करते हैं अमूमन जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो आप इस तरह से इसको देखते हैं कि तीन हैं और ये जुड़े हुए हैं, तो आप इसको टर्नरी कहते हैं। ये टर्नरी नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप है जिसके साथ सिर्फ एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और एक कोर्स, तो ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है। जब आप इस वाले डायमंड को या लाइन को देखते हैं तो इसमें फिर दो जुड़े हुए हैं, ये एक और बाइनरी है। इसको देखते हैं तो इसमें भी, तो लिहाजा ये टर्नरी नहीं है। इसमें तीन एंटिटी क्लासेस हैं, लेकिन हर दो एंटिटी क्लास एक रिलेशनशिप से जुड़ी हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ टर्नरी, लेकिन ये तीन बाइनरी हैं, एक बाइनरी, दो बाइनरी और तीन। सो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। ये आप लोग गलती कर जाते हैं कि जब आप देखते हैं कि तीन एंटिटी क्लासेस हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि इसकी ये रिलेशनशिप अलग है। ये तीन रिलेशनशिप हैं और हर रिलेशनशिप बाइनरी। Another example of the ternary, there is customer buys product from some outlet. Say we have some store and it have many outlets. So this diagram or this model can give me information which customer bought which product from which outlet of that chain of stores. So this is ternary, degree 3. And here again I will repeat, these are three binaries, not one ternary, right?
So this is another example of ternary or degree 3. Employee works on a project on some specific department. Again, it is degree 3 relationship, right? This is example of the degree 3 or ternary relationship. And again, I will repeat here, these are 3 binaries, not one ternary. So please avoid this mistake. This is from the book. ये आप लोग किताब से देख सकते हैं, right? Now we have n-ary or higher degree relationship. So if we increase the number of entity classes with the relationship, then it will become n-ary. Let me explain. If 4 or more entity classes participate in a relationship or in one relationship simultaneously, then it is known as n-ary relationship. And n is equal to number of entity classes that participate in that relationship. Let me show you with the help of an example. So here, this is single line. This is one diamond. If you remove the diamond, again you can have the single line that is connecting all 4 entity classes. So now, as student registers or studies some course from some teacher in a program, so in fact we have this relationship with 4 entity classes, so it will be n-ary or higher degree, and here we will consider n is equal to 4. That is, the number of entity classes is 4. So let me explain in Urdu. अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा एंटिटी क्लासेस हो जाएं और हम 4 हों या 5 हों, तो उसको हम कहते हैं n-ary रिलेशनशिप, और जितनी उसके अंदर एंटिटी क्लासेस हिस्सा लेती हैं वो उनकी तादाद n के बराबर हो जाती है. तो अगर मैं अब आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, एक डायग्राम है कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है कोई कोर्स किसी टीचर से किसी प्रोग्राम में. तो ये 4 एंटिटी क्लासेस एक रिलेशनशिप के साथ हैं, एक लाइन के साथ हैं, एक डायमंड के साथ हैं, तो इनको हम हायर डिग्री कहते हैं. और क्योंकि इनको गिने तो 1 2 3 4, तो ये जो n-ary का n है ये हमारे पास 4 हो जाता है. हम कहते हैं इसमें 4 एंटिटी क्लासेस हैं. तो लिहाजा ये मिसाल है हमारी हायर डिग्री की. यहाँ पर देख लीजिए, बाज़ौक़ात हम बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के लिए यार इतनी ताकत का प्रोसेसर चाहिए, इतनी मिकदार में रैम चाहिए और इंटरनेट की बैंडविड्थ इतनी होनी चाहिए. तो देखिए ये क्या हुआ, ये एक ऐसा ताल्लुक बन रहा है जो हमें 4 मालूमात या 4 तरह का डेटा एक साथ दे रहा है. कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम और कितनी बैंडविड्थ पर चल रहा होगा या चल सकता है. सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ हायर डिग्री वेयर वी हैव n is equal to 4. Then here we have n is equal to 5. That is, student is studying some course from a teacher in some class in some program. So now n has become 5. So still it is higher degree. It is the example of higher degree. So in this way we can describe the degree of relationship. अब यहाँ पर देखिए, 4 के बजाय अब 5 एंटिटी क्लासेस एक ही एसोसिएशन या रिलेशनशिप के साथ जुड़ चुकी हैं. स्टूडेंट पढ़ता है कोई कोर्स किसी उस्ताद से किसी क्लास में और किसी प्रोग्राम में, तो लिहाजा n अगर हम गिने तो 5 है, यानी 5 एंटिटी क्लासेस हैं. तो इसको हम हायर डिग्री या n-ary रिलेशनशिप कहेंगे और n जो होगा वो 5 के बराबर होगा. सो दीज आर फ्यू, दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, so you can check it from the book. Thank you very much for today's lecture. Please apply all these concepts in your class project and submit it within time. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.